when you are thinking on the agricultural sector, your interest, पैसा है बोल के कोई मत करो, क्योंकि बहुत ही ये चला है टैक्स फ्री इनकम का भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। बहुत लोग, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। लोग क्या सोच रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में आए तो मेरा कन्वर्शन कर सकता है, गन्ना कर रहा है एंड ही यूज्ड टू बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए एंड ही यूज्ड टू गेट मनी एंड पुट इनटू द एग्रीकल्चर। क्रॉप आ गया, अच्छा दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है, और जो क्रॉप आने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद में इंटरेस्ट में चले गया। हमारा एजुकेशन करवाने के लिए भी ये टफ था, हमारा कुछ ज़्यादा कुछ फीस नहीं था वो टाइम पे, 3,000 दिए तो साल का फीस था, वो साल का 3,000 भरना भी बहुत मुश्किल था। नाउ वी आर ऑन द 60 to 70 crores of turnover annually we are able to do now. And I want to highlight that this is purely as a farmer. Tiredness is not accepted in the farming industry. You are tired for 1 week, after 1 week you go, there is a problem. आप ही बोलते हैं most of our friends, भाई मैं तो एक हफ्ते आपके साथ में कोलंबिया आया, मैं आने के बाद में मेरा फार्म पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो गई। किसी को एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर में आना है, a lot of people पूछ रहे थे लैंड कैसे लेना है, लैंड कहाँ से लूँ, should they invest in agriculture land? Is investment in agriculture land as of 2024 a good option? दोस्तों, अगर मैं किसान के बारे में बात करूँ या खेती या एग्रीकल्चर के बारे में बात करूँ, तो आपके दिमाग में एक ऐसा पिक्चर पेंट होता है जिसमें आपको दिखती है गरीबी, लो इनकम और एक लो टू मॉडरेट लाइफस्टाइल। अगर मैं आपको बोलूं कि खेती कर कर एंड थ्रू एग्रीकल्चर आप बड़े बड़े गाड़ी चला सकते हैं, करोड़ों में कमाई कर सकते हैं एंड एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे। हमारे आज के मेहमान इसके एक वॉकिंग टॉकिंग एग्जाम्पल हैं। इन्होंने तेलंगाना के एक छोटे गांव नागनपल्ली में अपना केवल 10th पास कर आज एक एग्रीकल्चर बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। इन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया था एट अ सैलरी ऑफ 1,000 रुपीज़ पर मंथ एंड आज इनकी फार्मिंग और फ्लावर की बिजनेस इज डूइंग अ टर्नओवर ऑफ 60 to 70 crores पर एनम। आज हम इनसे बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस, हाउ यू इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फ्लोरिकल्चर, आपके लिए सही पाथ और स्टेप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट क्रॉप्स के इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, एंड अ लॉट मोर। I promise you, if you watch this episode right till the end, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा and you will learn so much more about how the flower business works in India. As always, if you are someone who feels you can add value to Indian agriculture और आपको लगता है अपने experience और journey in agriculture and farming के through आप लोग की मदद कर सकते हैं, then please reach out to us on the email ID mentioned below and we will get in touch with you. Presenting to you Mr. Shrikant Bolapally on AgriTalk. श्रीकांत बोलापली सर, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अभी से। और कैसा चल रहा है सर आपका? फ्लोरिकल्चर तो अभी इंडस्ट्री थोड़ा स्लम्प में है, बट ठीक है। पीपल जो फोकस्ड है, जो डेडिकेटेड है, जो पीपल आर बीन अपग्रेडेड है टू द टेक्नोलॉजीज, कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड से जो भी चल रहा है, दे आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन आपने कहा डंप में है, व्हाई इज दैट? आफ्टर कोविड के बाद में थोड़ा इंडस्ट्री जो भी है, आफ्टर द कोविड पीपल थॉट प्रोसेस ऑफ द थिंग एंड थोड़ा आर्टिफिशियल, थोड़ा स्पेंडिंग पावर भी कम हुआ है एंड आर्टिफिशियल में बहुत ज़्यादा मार्केट में आके थोड़ा इंडस्ट्री को थोड़ा सप्रेस किया है। बट ये वो साइकिल में आई फील नाउ पीपल देर आफ्टर लॉट ऑफ कैंपेन्स, हम लोग सब लोग मिल के कर रहा है थोड़ा, उसके बाद में आई थिंक पीपल आर गेटिंग बैक इनटू दैट नेचुरल मोड। कोविड से पहले तो आप कह रहे हैं ज़्यादा था टुवर्ड्स नेचुरल फ्लावर्स, कोविड के दौरान थोड़ा सप्लाई कम हो गया होगा आई बिलीव। Yes. उसके वजह से दे स्टार्टेड गोइंग मोर इनटू आर्टिफिशियल फ्लावर्स। यस, आर्टिफिशियल फ्लावर्स कर रहा है बिग फैट वेडिंग्स में। जो मिडिल क्लास में लोग मिक्स एंड मैच में पहले से भी ले रहा था, बट द टॉप वेडिंग्स, द पीपल हु हैव बीन वेरी एस्टैब्लिश्ड, वो जो है इंडस्ट्री में, दे हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग, वो लोग भी थोड़ा आर्टिफिशियल का तरफ में आया हुआ है। अभी थोड़ा फिर लोग अगेन टर्निंग टुवर्ड्स द नेचुरल फ्लावर्स। यस, बट आर्टिफिशियल फ्लावर्स की तरफ व्हाई वर दे गोइंग? इज इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था या क्या था रीज़न?
सस्ता बोले तो see the decorators who have been there in this industry, when they take a big fat wedding, the time frame, now they have to finish when they get the function halls to their hand, उससे finishing time का the time slot is very less for them. Okay. ये artificial flowers के साथ में, ये तो artificial flowers is a dead flower. You आप एक महीना के पहले भी आप लोग काम करके लगा सकता है, and then पूरा फिक्स करके उसका टाइम फ्रेम में आर्टिफिशियल फ्लावर्स को विजिबल का एरिया में फ्रेश फ्लावर्स लगा रहा है, एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स में थोड़ा द हायर साइड जो भी गेस्ट आ जाता है फील्ड प्लेस में नेचुरल फ्लावर्स है, ऊपर का प्लेस में एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो सिंथेटिक फ्लावर जो भी हो रहा है मार्केट में, दैट गिव्स ए कलर इम्पैक्ट भी ज़्यादा देता है. And people are not focused on that. That is how that those people are promoted in a bigger way. Now I feel things are coming back. But I feel हाँ इशू क्या है कि लोग जानते नहीं कि फ्लावर्स की कितने वैरायटीज हैं. जैसे आपने बोला कलर के बारे में. Yeah. अगर आप सोचो प्रैक्टिकली हर कलर का फ्लावर ऑलरेडी है एंड हर डिजाइन हर शेप का. जैसे हमने काफी दुनिया देखा है, आपने काफी ट्रैवल किया है. Yes, sir. फॉर इंस्टेंस कंट्री लाइक कोलंबिया, उन्होंने तो रोजेस दे आल्सो दे आर प्रोड्यूसिंग इन मल्टीपल कलर्स, राइट? Every flower has a multiple colors. The only problem is the customer or today there is a family wedding. When we negotiate with a designer or a decorator, the customer, some of the designer says, sir, this is the percentage of artificial flowers, this is the percentage of natural flowers. Okay. But most of the decorators, they talk on the fresh flowers the day of the event. Either you in your family or our family, we doesn't go and check all the thing. We are busy with receiving guests and all those things. Most of the trend, what happened, they fix it with the artificial flower only to make the money. The designer has to make पैसा ज़्यादा है उसमें, there's more money because it's a dead flower. You invest one time, you can use it for 100 times. Fresh flower is one for the only one event. He can make more money out of it. Then he try to mix it up. And by the customer, the guest who has been planned for the wedding, he doesn't know what is being used. And only when people like us go there, when we observe, when we talk, then they will come to know that okay, there is an artificial flowers is being. Understood. But now that awareness, now any events which is happening, people have been forcing it. We want the volume of flowers you use less. But we want the fresh flowers. We don't want dead flowers in the thing. Now, when we talk about only weddings, when we talk. Now, people talk, when we go to a temple, why don't we carry an artificial flower to the Bhagwan? Because everybody is scared. Everybody लालच है कि भगवान को नहीं देना because they want all the offerings, no? ये फूल दे के जाके दिल से भगवान हमको एक बड़ा बंगला दे दो, बड़ा कार दे दो, ये पूरा पूछना है. भगवान के पास कैसे जाता है? भगवान के साथ नो चीटिंग. क्यों? बिकॉज उधर से आना चाहिए ना. एवरीबडी सेल्फिशनेस इज देयर. बट शादी में गया तो देन इट्स ओनली द ट्रस्ट. वो जो उसका बेटी का शादी कर रहा है, 5 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, काम के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है. बाद में इट्स ऑल द डिजाइनर थिंग. वो उस टाइम पे गेस्ट को रिसीव करेगा ना, फ्लावर को चेक करेगा. नाउ द मोमेंटम हैज टू कम. Everybody who's doing, he's spending for his daughter's wedding with a love. Flowers are what, sir? It's a feeling. It's an emotion. It's an emotion. It's a feeling, love. उसका जितना प्यार है उसका बेटी का ऊपर और सन का ऊपर और कोई भी बर्थडे का, जो you are expressing your views, उसी को भी artificial में लाके, then why do you celebrate? Don't celebrate, no? शादी भी artificial कर लो. Yes, don't do it. No more. There is no demand. No one. If you don't want to go with the fresh flowers, don't celebrate. Why do you want to show it up saying that I am doing so much? But once they are spending on the flower, you see how many people have been attached to that. There is a decorator, there is a wholesaler, there is a retailer, there is a grower, there is a farmer, there is a fabricator, labor, everybody. There, how many sectors of people you have been supporting? Does this support a businessman who does his daughter's wedding? Will also get a support in some business to him also, no? The cycle has to run. पूरे cycle में लोग everybody. It's not that one sector if you are giving to a decorator doesn't make it everything. Decorator also has to give to a wholesaler has to give it to a farmer has to go to a fertilizer. It's a cycle. Labor, everybody, employment, it's a cycle, and everybody is getting that benefit. That
we have to understand this both thing. Don't spend in our, nobody is demanding you have to spend so much 10 lakh rupee, 20 lakh रुपया खर्च मत करो. Whatever you do for your daughter, your family, any celebration, do it with fresh. आपका स्माइल भी अच्छा रहता है ना. You love that natural things, no? आई थिंक एक किसान और जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, Yes sir. ओनली दे ट्रूली रियलाइज कि फ्रेश फ्लावर में नंबर 1 ग्रोइंग में कितना मेहनत जाता है, और एक फ्रेश फ्लावर और एक आर्टिफिशियल फ्लावर में डिफरेंस क्या है. क्योंकि फॉर पीपल इज जस्ट डेकोरेशन, Yes. दे डोंट सी द वैल्यू चेन एंड द एफर्ट गोइंग बिहाइंड इट, राइट. एंड जैसे आपने बोला, जब मंदिर में जाएंगे लोग, मंदिर में कभी भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे. क्योंकि उनको लगता है भगवान है, नेचर से कनेक्टेड होना ज़्यादा ज़रूरी है, Yes. राइट. सो द सेम फंडामेंटल हैज टू गो इन ऑल एप्लीकेशन ऑफ फ्लावर्स एज वेल. Yes. That is what our ancestors वहाँ से जो भी लिए, तो हम लोग खाना खाए तो भी किचन गार्डन से भी, घर के पास से भी, एवरीथिंग इज नेचुरल. दैट इज व्हाट आवर एंसेस्टर्स हैज टॉट अस. घर में फूल का भी एक पॉट भी लगाओ, वो पूजा के लिए वो काट के लगाओ. दैट इज व्हाट. बट नाउ दिस द सोसाइटी, एवरीथिंग रेडीमेड जैसा आ गया, आर्टिफिशियल में आ गया. वो एक बार एक हम मैरीगोल्ड भी कोई घर पे देखता है, एक मैरीगोल्ड का एक हार घर पे कभी भी आर्टिफिशियल लगा हुआ. एंड व्हाई डू यू वांट टू कीप दैट आर्टिफिशियल डेड थिंग? यू आर इनवाइटिंग समवन फॉर अ शुभ कार्य के लिए, घर के लिए कोई गेस्ट को इनवाइट कर रहा है, एंड डेड थिंग यू आर पुटिंग इन योर हाउस. व्हाट इज दैट इंडिकेशन वी आर गिविंग टू द सोसाइटी? आई थिंक हम नेचर से धीरे धीरे वी गेटिंग मोर एंड मोर फार. इवन विद फूड, लाइक यू मेंशन्ड, इट्स ऑल प्रोसेस्ड फूड अभी. Yes. फ्लावर तो it shouldn't happen in the first place at all, right? Yes, it should not happen because there are so many lives. See, it's a cycle. They should understand the cycle, sir. Once anything, if they want to do a birthday party, if they 1 year birthday celebration you want to do to your small grandson or a grandchild, or your son, daughter, and you do it with an artificial flowers, उसका इतना खुशी रहता है फर्स्ट ईयर, एंड यू हैव दैट फीलिंग्स इन योर हार्ट. हमारा बेटे का इतना बड़ा, हमारा ग्रैंड इतना का, बट एंड वंस यू गो विद द आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एंड व्हाट इज दैट मैसेज यू वांटेड टू गिव? व्हाई आर यू शोइंग दैट? आपका घर में कर ले हो ना, एक केक ला लो, कट कर लो, देन व्हाई डू यू वांट टू शो इट टू द समवन विद आर्टिफिशियल थिंग्स? ट्रू. आई थिंक दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज लोग को जाना चाहिए. सर, लेट्स टॉक अबाउट यू. सर, आपने 10th पास किया फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड नागनपल्ली इन तेलंगाना. हम बहुत मस्ती करते हैं विद दैट वर्ड, बट 10th के बाद आपको फार्मिंग में कैसे है? व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट इनटू फार्मिंग? वाज इट द सिचुएशन एट द टाइम कि आपका पहले से पैशन था कि मुझे फार्मिंग और खेती करना है? बिकॉज आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग उस उम्र में उनको नंबर 1 आइडिया भी होता है, और अगर आइडिया भी होता है तो दे डोंट थिंक फार्मिंग एज द ऑप्शन टू गो टू. सर, हम जो तेलंगाना में जो बोधन नागनपल्ली हमारा जो विलेज है, that was on the border of Maharashtra, and there was only crops जो हो रहा था paddy and sugar cane. वो तो आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉप वही होता है. वही होता है. एंड जैसा हमारा एजुकेशन जा रहा था, हमारा फादर ने जो, he was only agricultural family, all my parents, only the person who has come out of our family was me to this level. And when we are doing that गन्ना कर रहा है, and he used to borrow money for investment के लिए, and he used to get money and put into the agriculture. क्रॉप आ गया, अच्छा दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है, और जो क्रॉप आने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद में इंटरेस्ट में चले गया. हमारा एजुकेशन करवाने के लिए भी ये टफ था. हमारा कुछ ज़्यादा कुछ फीस नहीं था वो टाइम पे. 3,000 दिए तो साल का फीस था. वो साल का 3,000 भरने भी बहुत मुश्किल था. करके हम 10 तक कैसा भी खींच के then there was a situation where my father was not able to pay that 10th का फीस नहीं हो जो. then वो बोला है नहीं, कैसा भी मैं करके करेगा. हम तो देख रहे हैं, अरे सर, 1 साल इतना एकड़ हमारा फादर ने ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है, ये क्या हो रहा है? क्रॉप देखने से बहुत अच्छा है, अरे तुम्हारा तो बेस्ट क्रॉप है, सब लोग गांव में बहुत अच्छा, अरे तुम लोग बहुत अच्छा कर, बट फाइनेंशियली वी आर नॉट सीइंग, पैसा नहीं आ रहा था. देन 11th में जैसा इंटरमीडिएट में हमको ज्वाइन करवाया, हम बोला हम नहीं पढ़ाई करेगा. आपने पढ़ाई करने से मना किया. क्यों? वो बोला नहीं, हम कुछ भी कष्ट होने दो, आपको पढ़ना है. आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास. हमारा कभी भी वो फर्स्ट इन क्लास का बैच रहता था. ओके. बट फाइनेंशियली नहीं, तो मूड वो ही था. घर में लोग आके, तुम्हारा फादर ने पैसा देना है, कितना पैसा बोले तो ज़्यादा नहीं था, 3,000 रुपये. वो जो भी है वो,
लोगों को बारगे 10,000 ला लेता ना इंटरेस्ट के लिए, वो देने के लिए हमारा घर पे पास सुबह आके पैसा के लिए आता था वो. दैट वाज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन डिस्टर्बिंग. देन आई थॉट आई विल नॉट डू. फिर बाद में जैसा एजुकेशन नहीं करे तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है. आई वाज स्टार्टेड टू सपोर्ट माय फादर ओके इन द वही एग्रीकल्चर. हम भी 3 साल किया है एट द एज ऑफ 15 से 17 एंड तक मैं उधर ही था. मैं भी करने के बाद में वो जो रहता है ना इंग्लैंड में, ठीक है मेरा फादर ने कुछ नहीं करके दिखाऊंगा मैं. हाँ मैं कुछ अलग से करके दिखाएंगे, नहीं ये कुछ गलती कर रहा है. हम भी करे तो वही था सिचुएशन. नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ. कुछ चेंज फैमिली में चेंज नहीं है, वही सेम लाइबिलिटीज एंड पीपल प्रेशर. टोटल लाइबिलिटी जैसा था 5 लाख रुपया था हमारा ऊपर. वो 5 लाख निकालने के विलेज में दैट वाज अ वेरी बिग लाइबिलिटी. ये 5 लाख आपके बिकॉज ऑफ इनिशियल फार्मिंग ही था इशू? यस, फार्मिंग का था. एंड देन आई सेड नो, अभी इधर तो कुछ भी, हम गांव से कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, बट आई विल नॉट स्टे इन द विलेज. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. ओके. अपॉर्चुनिटी भी कैसा था, 1995 में वन ऑफ द फ्लोरिकल्चर फार्म इन बैंगलोर was getting established, जो हमारा नेटिव का जो एमपी है, they were just setting up. वो लोग भी कैसा मेरे को लेके आए इधर, वो पहचान वाला रहता गांव में, क्या रहता, अरे हमारा ये काम चल रहा है तुम जाके वो काम देख लो. दैट इज हाउ आई हैव कम इन 1995 जून 15 को. पहली बार एक गांव का आदमी एक टाउन पे भी नहीं गया, एक स्टेट से बाहर स्टेट में जा रहा है. बेंगलुरु बोले तो बेंगलुरु का नाम एक ब्रांड था, वो सारे बेंगलुरु जा रहा है, वो एंग्जाइटी था. आ गया इधर आने के बाद में, वो क्या है, अरे वो फूल का गुलाब का फार्म है वहाँ, वो फॉरेन से ग्रीन हाउसेस आएगा, उसके ऊपर एक रोज 25 रुपये जाएगा, 30 रुपये. दैट वाज द टॉक, इनिशियल टॉक. फिर भी हमको तो बेसिक एग्रीकल्चर से एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी में एक ही बार से शिफ्ट हो गया. एक ही बार नागनपल्ली से सीधा बैंगलोर जैसा आने के बाद में इजरायली से कंपनी ग्रीन हाउस पूरा इंजीनियर से है, बेंगलोर इंडिया से है. दे वर कंस्ट्रक्टिंग द ग्रीन हाउस. पूरा ड्रिप इरिगेशन को भी वो टाइम पे मालूम नहीं था, ग्रीन हाउस भी मालूम नहीं था, क्या कल्टीवेशन कैसा कुछ भी नहीं था, ओनली अपार्ट फ्रॉम पैडी. बट द बेसिक्स वर नोन. वो प्लाविंग कैसा, सॉइल प्रिपेयर, वो तो आपने 3 साल किया था. वो किया तो थोड़ा बेसिक था. उधर करते करते देन लॉट ऑफ प्लांट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम हॉलैंड. पूरा वो टाइम पे वैसा ही था इंडस्ट्री. इधर भी टेक्निकल नॉलेज नहीं था. What is the technical knowledge? Israel was one of the base, and one was the Europeans who are the Holland. knowledge sharing people, and from there only all the technology and planting material was coming. वो गाइडेंस से हम लोग 1.5 साल वो कंपनी में काम किया. आप क्या रोल पे काम कर रहे थे वहाँ पे? वही वो कंपनी में जैसा काम कर रहा था, मेरा एक्सपेक्टेशन था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट ऑल द जनरल पैकिंग गिकिंग, सुपरवाइजर सुपरवाइजर नहीं, जनरल मैनेजर, जनरली पूरा. इट वाज नॉट ए पोस्ट लाइक दैट. आई वाज इनटू ऑल द एक्टिविटीज, सब कुछ देखता. देन मेरा एक्सपेक्टेशन था, अरे 3,000 रुपया दिया तो अभी 18 मंथ्स काम किया, हमारा गांव में इतना जा सकता है, 5,000 दिया तो इतना आएगा. आई वाज ओनली पेड 1,000 रुपीज एट दैट टाइम per month. 1,000 rupees per month. And 18 months I was being paid 18,000 in envelope. Then it was a big shock for me. At that time, what was the standard salary? मतलब कितना? 3,000 to 5,000 was things were happening. And I was only paid. And I was been working for 18 hours. I was staying in the farm, everything. And the management said only this is what we can pay. 1,000. Then हम ये 18,000 लेके गाँव में कैसा जाके मुंह दिखाएगा? वहां से तो बाकी इधर आया, हम तो चैलेंज करके आया, हम बाहर जाके कुछ करके दिखाएगा. और वही गांव में कोई भी गया तो क्या बोलेगा, 1,000 रुपया लाया तो अरे तुम तो 30 रुपया का इधर का काम करता. डेली वेजेस के लिए भी गया तो भी 50 रुपया आ जाता था. 1,500 तो इधर ही कमा ले सकता है गाँव में. उतना दूर जाके 1,000 रुपया लेके आए बोले तो 30 रुपया दिन के लिए, 33 रुपीज. हमको तो शर्मिंदा, हम गाँव आएगा बोल के सब हमारा माँ बाप को बताने के बाद में आई डिडंट गो. Okay. I took that 18,000. I said bye to that company. Then आके क्या करना है, हमारा जिंदगी तो फ्लावर के साथ में ही जुड़ गया. जैसा तो गांव से ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा मालूम भी नहीं था. Then I thought I spoke to few people in the industry. Then they have suggested me, why can't you do flower trading? बोले तो फार्म से फूल खरीदो, किधर बेच लो. उस समय आप ग्रो नहीं कर रहे थे? नहीं,
That was my initial start, which is 1997 नवंबर में आई हैव स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग. वो ट्रेड से स्टार्ट किया हमारा ज़िंदगी. होने के बाद में छोटा सा रूम ले लिया एंड दिस 18,000 ओनली वाज माय इन्वेस्टमेंट. आई डिडंट हैव मनी. लेके थोड़ा फार्म्स, इनिशियल फार्म्स, नागार्जुना बायोटेक, क्लासिक बायोटेक, ब्लूमिंग मेडोज and Wasavi. These are the 4 companies because I was there in the industry and these people know me. These are the initial people who have supported me like anything. They have given flower because that money is required. Once you go to the farm without money, who will give you the flowers? How the trust has to? They give me. Like that, I have started in 1997 as a flower trader. Flower trader, and the first year turnover was only 5 lakhs. But from 18,000 to 5 lakhs is a lot. 18,000 was investment. And from there, the turnover of that whole year was 5 lakhs. Okay. Because I didn't get that business. But after that, every year I have started growing 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs. And we have reached in the trading around 40-50 crores. We have reached. When our growing has added to that, now we are on the 60 to 70 crores of turnover annually we are able to do now. And I want to highlight that this is purely as a farmer. Yes. You have not done any other high-tech business or anything. This is purely farming. You're able to earn 60 to 70 crores of revenue per year. Not an turnover. Turnover, yes. Turnover, yeah. It's a turnover of the company. And from there we started doing. Then वो तो मेरा blood में था. अरे ये तो trading है. We are been seeing. I was been communicating. जो farmer लोगों से ही communication होता है. अरे ये फ्लोर हम कर से तो और भी अच्छा कर सकता हूँ. वो रहता है ना. That I should do. And then थोड़ा जैसा ये business करते रहे, थोड़ा पैसा accumulate करते गया. Then in 2010 में I wanted to do agriculture. वो 2010 में आई हैव स्टार्टेड प्रोक्यूरिंग माई लैंड. 10 एकड़ से पकड़ के आज वी आर ऑन द 70 एकर्स ऑफ लैंड. तो आपने जो ट्रेडिंग से पैसा कमाया, द कैपिटल यू अर्न, यस, यू पुट दैट इनटू गेटिंग लैंड. यस, ओके, यस. 10 एकड़ से 2010 से आज तक स्लोली एवरी ईयर एक्सपेंड करते करते नाउ 52 एकर्स ऑफ ग्रीन हाउस वी आर हैविंग. इफ यू कॉल इट एज 20-21 हेक्टेयर्स ऑफ ग्रीन हाउस. And other net house, open field का around 20 acres. We are around 70 acres का भी कर रहा है. 72 acres of farming completely. Yes. Only agriculture. This apart from this, we don't have any other business. We are only into the little bit of trading, and we are into the more now focused is on the growing. Understood. So now, sir, let's say अभी किसी को एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर में आना है. अ लॉट ऑफ पीपल पूछते रहते हैं लैंड कैसे लेना है, लैंड कहाँ से लूँ, शुड दे इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड, इज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर लैंड एज ऑफ 2024 अ गुड ऑप्शन? क्योंकि ये प्राइस तो बढ़ता ही रहता है आगे फ्यूचर में. हम किसी को भी बोलता है सर, सी एग्रीकल्चर में जो भी आना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव इंटरेस्ट. बहुत लोग क्या करता है, दे गो टू इंस्टा और फेसबुक और कहीं भी सोशल मीडिया में जाके पॉडकास्ट कुछ भी पॉडकास्ट वो लोग देखता है. एक श्रीकांत का वीडियो देखा है ना, या तो एक अभी का वीडियो देखा है. इधर तो आता है. सी हम लोग आज तक 27 ईयर्स ऑफ आवर जर्नी, 27-28 ईयर्स ऑफ आवर जर्नी में हम लोग यहाँ तक आए. बट आज का हमारा जो बात होता है ना, ये बात को वो लोग दे वांटेड टू सी फ्रॉम द फर्स्ट डे. उन लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये बात पॉडकास्ट पे शुरू नहीं हुआ है. हाँ, ये 27 साल के मेहनत एंड ग्राउंड लेवल फार्मिंग के बाद हुआ है. यस. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या लेता है, अभी जो हम जो बोला है ना 60 to 70 crores ऑफ टर्नओवर, ये बात हर एक आदमी का माइंड पे अच्छा चले जाता है. लाइक दे शुड टेक एनी एग्जांपल. हम भी ऐसा एग्जांपल नहीं लिए तो आज आई वुड हैव नॉट कम टू दिस लेवल. ट्रू. जो भी आदमी आना चाहता है, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन द लैंड तो बूम आता है. कभी आपको नेवर एवर गिव्स यू आपको ब्लेसिंग ही आ जाएगा लैंड का ऊपर जो भी पैसा डालता है. बट दैट इज हाउ द एवरीबॉडी हैज ग्रोन इन द वर्ल्ड. जो आदमी पैसा क्या तो दूसरा बिजनेस में आपको खराब हो सकता है, बट जो जमीन का ऊपर पैसा डालता कभी खराब नहीं होगा. तो अभी भी खरीद सकते हैं लोग. यस, एनीबॉडी एनीवेयर यू कैन बाय. करो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इसका बाद में व्हेन यू आर थिंकिंग ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, योर इंटरेस्ट,
पैसा है बोल के कोई मत करो। क्यों अभी बहुत ही ये चला है टैक्स फ्री इनकम का भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। बहुत लोग, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। लोग क्या सोचते हैं, हम एग्रीकल्चर में आए तो मेरा कन्वर्शन कर सकता है, हाँ मेरा ये हो सकता है, वो बहुत सारा उसका माइंड में चले जाएगा। हमारा पैसा पूरा वाइट, इसको टैक्सेशन नहीं है, बट बहुत टैक्सेशन नहीं है, बट लॉट ऑफ योर टाइम इज रिक्वायर्ड, एफर्ट्स, डेडिकेशन। ऐसा ही तो नहीं हो सकता है कोई, ऐसा ही तो कोई नहीं हो सकता। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। अनटिल एनलेस कोई डेडिकेशन से काम नहीं किया है, यू डोंट गो टू योर फार्म, योर इन्वेस्टमेंट इज गोन लाइक दैट। जो पैसा एग्रीकल्चर में जाता है, इफ यू डोंट हैव टाइम, मट्टी में गया। मट्टी में जो पैसा डाला है, मट्टी से निकालना पड़ेगा। करेक्ट। मट्टी में से नहीं निकाल पाया तो यू आ गया। वो ये जो टेक्नोलॉजीज जो है अडॉप्ट करो, बट उसको यूटिलाइज करो। सर एक टेक्नोलॉजी भी इन अ वे लोग को समझना जरूरी है कि ग्रोइंग इज अ स्किल। यस, अगर आप बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हो, बट इफ यू आर नॉट अ गुड ग्रोअर, देन यू माइट नॉट बी अ सक्सेसफुल farmer on the whole, right? If you can't be a good grower also, there are people in our industry to support you. To support, okay. But your time, see, that knowledge can be given by most of the people. There are so many people who are there to give you technology. Adopt it, utilize it, implement it. If you don't implement, if you are not a good implementer, if you are not a good listener, don't get into agriculture. Most of the people come with the muscle power, money power. I have money, I know everything. I know everything. अरे उसको क्या बोलना है, हमको भी करना आता है। ठीक है, getting an infrastructure is land खरीद लिया, you go to any fabricator, you get a greenhouse, irrigation is done, plant supplier, you get a good tissue culture plants, you put it, then you have to grow it. The life of the plant you have to enjoy. The whatever the money, the infrastructure you have put, greenhouse, irrigation, everything, after investing 50 to 60 lakh rupees on 1 acre, you have to get it from where? आपको तो मट्टी से ही निकालना पड़ेगा, हाथ गंदा करना पड़ेगा, हाथ गंदा करना। विदाउट सर एनीबडी गेटिंग इनटू एग्रीकल्चर, इफ यू आर गोइंग विद अ वाइट पैंट एंड वाइट शूज, आप जाएगा मेरा गंदा नहीं होना रहा, अरे भाई वो क्या हो गया, कितना प्रोडक्शन आया, क्या आया, दूर से देखो, व्हाट्सएप से देखो, फोन कॉल पे देखो। प्लीज नेवर एवर गेट इनटू एग्रीकल्चर। आपको जाना है एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही है। आप पैंट से करेगा, चड्डी से करेगा, दैट इज लेफ्ट टू यू, बट ये गंदा नहीं होना है। हमको सनलाइट से टैन आ जाएगा, हमको ये हो जाएगा, वो, दिस इज व्हाट एग्रीकल्चर विल नॉट लिसन। Nature doesn't care. Nature doesn't care. You have to spend with you have to listen to the plant. उसका क्या पेस्ट है, क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उसको you make the situation comfortable for the plant. That is why you are putting an infrastructure. Why you are protected cultivation. Why you are thinking of protected cultivation. बाहर भी लोग कर रहा है. Why you are building a greenhouse? Why? Because plants need it. Plants need that climate to give you extra income, extra production. Once the extra production is there, you are earning extra. Why the farmer who is doing outside is failure? Why is the growth is not happen? Why Shrikant from Naganpalli to Bangalore has travelled? He was doing agriculture, basic traditional agriculture. Why his total 2 decades of his generation has not grown? And today most of our brothers are also still struggling. I tell them to come, but their financial, वो आके करना इतना दूर, गांव से बाहर आने में ही वो लोगों को दिक्कत है। यू नीड टू फाइंड, हमको क्या कंफर्ट है, नेवर एवर थिंक प्लांट, व्हाट इज द प्लांट कंफर्ट एंड व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड। एवरी क्लाइमेट इज सुटेबल, यू कैन प्रोड्यूस टू द क्लाइमेट्स, देयर आर सो मेनी वेराइटीज। You only need to take a technical people, technical guidance, what varieties can be grown on what climates. There is a soilless cultivation. Orchids can be grown on soilless. आपको जमीन भी अच्छा भी नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, there is a crop. Right. Thailand is doing, and it is catering to the whole world. Their climate is too humid and too hot. But they're still doing it. Are they not catering dendrobiums to the whole world? Why are we still struggling with few varieties? There are so many varieties you can adopt. Why should we only restrict ourselves to something? The world is open. We have, see, I also have grown like that. From in 2000, firstly when I went to Holland to learn myself, because what is world?
And I was also scary I doesn't know from a from a village to the traveling to an international trip to learn agriculture, capture their views. And that is the best part where we can see anybody can learn. How they can learn? Only seeing, you get a lot of seeing, traveling, meeting people. And you can learn so many things and you adopt those things. You might not carry everything. I tell most of our friends, bhai kahin bhi jaane do, you catch bring 1%. 1% or a nut or a washer. I tell them, you go everywhere, you can't adopt everything. अरे एक भी हमको नट बोल्ट भी मिल गया तो हमारा सोल्यूशन हो सकता है. कोई कोई चीज जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स रहता है उसके लिए इफ यू कैन गेट ए सॉल्यूशंस यू वुड बी बेटर. ट्रू. हमारा तेलुगु में भी एक सेइंग है, जो मर्द बिना घूमने से खराब हो गया, जो औरत घूम के खराब हो गया बोल के बोलता है ना. गांव में जो बोलता है, यू नीड टू ट्रैवल, सी द वर्ल्ड, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड पे देखो, सीखो, अडॉप्ट करो. एग्रीकल्चर इज द फ्यूचर. आई ऑलवेज से दैट देयर इज अ मनी इन ए साइंटिफिक वे, टेक्निकल वे, एंड यू नीड टू अडॉप्ट. सर आपने इतना ट्रैवल किया, यू हैव ट्रैवल आई डोंट नो सो मेनी कंट्रीज. मैं तो आपको जब से देख रहा हूँ. यस. बाकी कंट्रीज में लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंट कंपेयर टू इंडिया, जो अभी हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं? जैसे आपने थाईलैंड का बात किया, दे आर ग्रोइंग सम वेराइटीज इन सॉइललेस कल्टीवेशन. यस. क्या ये इंडिया में पॉसिबल है एंड व्हाई हैज इट नॉट हैपेंड एज येट? अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? सर एक्चुअली इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स बेसिक फ्लोरिकल्चर फ्रॉम 95 से जैसा आया है. एंड आवर सॉइल्स आर वेरी organic, rich and everything. Our soils were supporting to the crops which we are doing. Now recently you are also a team of us when we have traveled Colombia. Yes. Colombia also has started their culture with the soil. After 2-3 decades their soil got exhausted because now most of the people in the world are dependent on the chemical fertilizer. They have been doing, the soil is a mother culture. You are killing all the elements which have been giving chemical fertilizers. The plant is also supported after few years. The soil is not supporting. Those people now what they have seen, their productions has dropped, their qualities has dropped. Now they have upgraded to soilless cultivation. Okay. They are doing soilless cultivation also. They are doing with the hydroponics, and they were been doing with the troughs, they were doing with cocoa peat, they were doing rice husk, fly ash, all these basic compounds what is required to the growth to the plant. The people are different people have selected. I think we are in India in a high time. Now we are also done with the 2.5 decades of time we have done in this floriculture. Now the success rate of a farmer is coming down. That is also one of the reason where industry is sinking. People need to upgrade themselves. And also sir, soil degradation bhi ho raha hai bahut. That is what I mean to say, sir. The mother soil is been killed with the chemical fertilizers. See, when you talk about the mother soil, now if you take your parents who are all their parents or grandparents in the agriculture sector. If I remember when I was there in my native, in 90s in my village, or my grandparents, they were being more dependent on the organic thing. Okay. They were growing paddy. They were been doing only using little of chemical fertilizer or DAP or urea, but more on the organic what is left over with their cows, that farm-made manure. They were being dumping gobar, बहुत ज़्यादा dumping कर रहा था, and they were being very happy and getting the production. From there, what happened now? We forgot putting gobar. आज हमारा soil को enrichment कोई नहीं कर रहा है. And we are on the chemical fertilizers. ज़्यादा chemical use हो रहा है. कितना भी मदर soil ले लेगा, वो soil को खराब कर रहा है. Enriching कहाँ कर रहा है? You are not protecting your mother soil. कैसे कर सकते हैं सर soil? मानो मैं एक किसान हूँ, मुझे soil को enrich करना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? Sir, and today in the floriculture में क्या हो रहा है? 365 days you are using the soil. जब replanting में जाता है, there are so many methods which you can. There is a green manure which you can put. Gobar है? That's gobar. Gobar is one of the thing, and one is you can senhemp. It's a green leaf.
ओके यू कैन पुट आपका ऑर्गेनिक कंटेंट्स और नाइट्रोजन लेवल ये पूरा वो एक लेवल तक ग्रो करके उसको सॉइल में मिक्स करने से दैट सॉइल गेट इनरिच्ड and you bring again vermicompost gobar and vermicompost is one of the bigger thing. अरे आपका पास जो फार्म पे किसान जो होता है कोई भी होने दो एनी फार्म यू टेक इट एज ऑर्चिड्स जो गोवा का फार्म होने दो यू टेक इट ए वेजिटेबल फार्मर और यू टेक ए फ्लोरिकल्चर फार्म अरे जो आपका पास जो वेस्ट आ जाता है यू प्रोड्यूस ए पिट्स इन योर फार्म उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो भी वेस्ट है गोबर डाल के वर्मी कंपोस्ट बनाओ केमिकल फर्टिलाइजर को 10, 20, 40 जो भी परसेंटेज कम कर सकता है कुछ तो कर रहे हो कुछ तो कर रहा है द प्रोसेस थॉट प्रोसेस तो हो रहा है वंस यू सी द सक्सेस रेट योर परसेंटेज विल गो अप जीवामृतम दीज आर ऑल द नेचुरल थिंग्स यू टू एनरिच योर सॉइल सर यू वो रहने से क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स भी अच्छा रहेगा एंड यू आर गिविंग टू द सोसाइटी ऑल्सो इन ए हेल्दियर वे pesticide will be lesser, yes. Soil will be healthier, yes, and you can recycle a lot. आपके फार्म में बहुत recycle भी होगा. Yes, I produce today 250 tons of vermicompost, which I use it to my own soil. आज मेरा 30 साल होने के बाद में भी मेरा फार्म पे क्वालिटी निकल रहा है तो because I have protected my soil. I have protected my mother soil. If I don't do that, then the next option is if I want to do this business is only soilless. Yes, if you have to upgrade to the soilless, then your production, that is a different culture again. Okay. If some farms, some of the lands doesn't have a good soil. See, today my soil might be there, I am only focusing on that. Now if I wanted to do some agri-business, my soil is not good. Now what he has to think? Soilless, hydroponics. There is a way. But you have to, again, everything again is only with the time. Understood. Money, you have it or not have it. There are so many banks to support you. There is government schemes which subsidy schemes. NHB is a National Horticulture Board, National Horticulture Mission, state boards are there. Somehow you get some assistance from them. And you go to the bank, you can start your business. Correct. But if you don't have time, investment तक पूरा डालने तक बहुत लोग investment time दिखाता है. बाद में he becomes a businessman. मोस्ट ऑफ द फार्मर 1-2 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर करने के बाद में उसका पास भी क्या हो जाता है 50-100 लोग काम करने लगता है जो वो इंडस्ट्री जैसा दिखता है लाइक अदर बिजनेसेस ही बिकम्स ए ओनर वो किसान जब तक माइंड पे है इज ए सक्सेसफुल पर्सन किसान से छोड़ के जो ओनर का वो बिजनेसमैन का टेक्नोलॉजी में चले गया अपग्रेड उधर वो अपग्रेड हो जाए पीपल आर नॉट गेटिंग अपग्रेडेड टू द टेक्नोलॉजी जैसे फार्मर से ओके बिजनेसमैन का माइंडसेट में चले गया तो एग्रीकल्चर में मत ना क्यों ऐसा क्यों होता है लेकिन सर जैसे बिजनेसमैन यू वांटेड टू रन विद द रिमोट कंट्रोल दैट डजंट हैपन ए फार्मर हैज टू लुक यू नो द फीलिंग ऑफ ए प्लांट डज योर लेबर नो ही कैन डू व्हाटएवर यू गाइड हिम बट यू आर द इन्वेस्टर यू आर द फार्मर हु नोज द पेन ऑफ द प्लांट उसको क्या टाइम पे देना Until unless you are there in the farm, your success will be 100%. Agriculture, mostly agriculture, any crop you take. You will succeed. जब आप involved रहोगे तो आप succeed करोगे. 100% हो जाएगा sir. It's a challenge. And you should be on the growing part. That is one of the biggest thing. And the next challenge what you trace is, you have produced your product and that again it is a marketing. Most of the growers क्या करता है अरे भाई मैं तो अभी production कर लिया है कोई आके बेचते हैं कोई अभी जैसा आदमी आना हमारा फार्म से मेरा कुछ भी रिस्क नहीं होना है वो आके लेके जाना है जैसा व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन क्या हो जाता है ही विल थिंक अबाउट हिज कॉस्टिंग एंड उसका अपना मार्जिन देखेगा वो अपना मार्जिन देख लेगा किसान को क्या दे रहा है ही डजंट वांट ही हैज हिज ओन बॉडी लैंग्वेज ही हैज टू रन हिज थिंग ही हैज हिज ओन से एवरीथिंग बट जो फार्मर नो जो हेक्टेयर के लिए 150 लाख जो इन्वेस्ट किया है why is he not thinking on the marketing part also? Correct. So अभी विलास से मैं बात किया था sorry to cut you off तो उन्होंने सेम चीज बोला जो आपने बोला he's like अगर आप किसान हो तो किसान खुद ही करो सब कुछ ये बाहर वाला आएगा आपका पैसा लेके चले जाएगा वही मैं बोल रहा है until unless you are focused 150 आप 10 हेक्टेयर कर रहा है तो 15 करोड़ रुपए बिजनेस में इसके एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है
उसका प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए यू वांट समवन टू डू फॉर यू. द मार्केट्स आर देयर. सी you are not an ordinary किसान. अभी जो जैसा you upgraded your technology, you come into the greenhouse technology, कोई भी हाईटेक टेक्नोलॉजी में जो करना है तो then your vision also has to go up. You need to reach to the. We were there in Colombia. We went to one of the farm. There was a slogan there, farm to the hearts. Farm to the hearts. What do you mean by that? The farm produce should reach to the heart of a person. That is a concept. They have been successful. They have been. They are like running like an industry. Now we all have to educate ourselves. True. Produce karo. Go to the markets. Spend time. Either you can't go. You appoint someone to do that marketing. Do some. Anyway, you invested on that. You invest on the marketing part also. Explore yourself. Reach to the markets. Then see the success. Then the failure percentage will be very less. Right. Tiredness is not accepted in the farming industry. You are tired for 1 week. After 1 week you go, there is a problem. आप ही बोलते हैं most of our friends, भाई मैं तो एक हफ्ते आपके साथ में कोलंबिया आया, मैं आने के बाद में मेरा फार्म पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये हो गया. क्यों हो रहा है? हम लोग तो क्या सोच रहा है, लेबर का. वी डोंट वांट अ टेक्निकल पर्सन इन बिटवीन. We can't hire a technical person. हो सकता है. We can, but most of the growers क्या कर सोच रहा है, वो 10, 20, 30 हजार के लिए सोच के the thought process of the farmer से upgrade हुआ है, but he is not upgraded on few things. वो क्या बोलता है, सचिन अभी बैटिंग कर रहा है, 99 पे है. If he does that, one run only century will happen. But वो 99 में डकआउट हो गया तो वो फीलिंग जो रहता है ना, most of the farmers वैसा ही हो रहा है. वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा नहीं करना चाहते. हाँ, वो जो एक आदमी को मार्केटिंग का आदमी लगाने से he will has to look into it. उससे फोकस करो, अरे क्या हो रहा है मार्केट से एक्सपोजर आप करो, नहीं तो you have to put someone, you invest on something where you can get a better thing. That True. You don't do. Technical people need to be. There is a industry में बहुत सारा लोग टेक्निकल लोगों को हायर नहीं कर पा रहा है, वही लोग कर रहा है, उसका जितना नॉलेज है उसी से कर रहा है. See, anything you invest on technology, you will see a better life. True. Whatever the percentage, you invest on something, you will be little better than what the others are doing. That is sure. Correct. So now आजकल अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग के पास लैंड पड़ा हुआ है और एक ही बार से वो अवेयरनेस आ रहा है कि मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, राइट. बट वो क्या चाहते हैं, जैसे आपने बोला, दे डोंट वांट टू बी एज इन्वॉल्व्ड. वो चाहते हैं कोई आए, उनके लैंड उठाए, उनके लिए फार्मिंग करे, उनको प्रॉफिट्स दे, टैक्स फ्री इनकम आए, राइट. आपको अभी 30 साल का एक्सपीरियंस है. मैं आपसे एक गाइड मांगना चाहता हूँ. अगर मैं एक नया फार्मर हूँ या कोई भी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो एक नया फार्मर है, दे वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, व्हाट इज द राइट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर देम टू गेट इनटू फ्लोरिकल्चर मोर पर्टिकुलरली, राइट. कहाँ से वो स्टार्ट करें, लैंड परचेजिंग, फिर जैसे आपने बोला सॉइललेस, क्या क्या क्रॉप वेराइटीज, बहुत सारी चीज़ आएंगे क्वेश्चन. मुझे एक बिगिनर ग्रोअर मांगो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हाउ वुड यू सजेस्ट आई स्टार्ट माई जर्नी विद फ्लोरिकल्चर. सर आपने ऐसा पूछा है, इफ ए पर्सन वांट टू, उसका पास जमीन है, वो स्टार्ट करना एंड ही डजंट हैव अ टाइम. Anyway, if should he invest time or if he doesn't want to invest time, what is it? How should he do? ये वो कौन सा बिजनेस में है? If he is a businessman, if he doesn't have a time, then he should have a right team. See, I only अभी तक क्या बोला है? I am small farmers का concept से बात किया है. When we travel in the world. There are 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares. A farmer can't run. You need to be an entrepreneur. You need to be in a big. Then your team should be there. If you don't have that proper technical team to adopt anything, the what plant requires is either you do it or you make your person to do it. Then only you can see the success. This industry. India has a lot of scopes when I travel to the whole world. See, today we are only producing to our Indian market. We are not able to export. There are challenges in the export because our volumes are very less. Now today we are in the Valentine week.
Now today, as Abhi, you come back with asking any grower, I want 5 lakh stems of red roses. Do any grower is there in India to supply so much of quantity? Not there? Not there. Because there is all small holdings. And how do you attract the international markets? International markets, they want volumes on the particular Mother's Day, Equality Day, they want volumes, means they want it. And most of our farmers are also restricting to 2 to 3 crops. There is a lot of varieties which has been there. We have restricted ourselves. We are the beginners. Our initial technical team who has been told, all the people who have brought into industry, where they have brought. See, the industry when it has started in 95, it has started with roses and gerbras. Our people are still stuck up with those varieties. Same way, do flower. And little bit when we have started traveling, today in my farm we have 8 to 10 varieties. We are doing roses, we are doing carnations, we are doing gypsophilia, gerbras, hydrangea, celosia, snapdragon, mechola, and we are doing curcuma, we are doing limonium. Wow. Okay. These are all, I have not, when we have traveled, we are seeing why all these varieties can't be grown. Couple of years back when I was there in Holland, I just saw one variety, hydrangeas. Why can't we try in Indian market? Then they said, no, this can't be, this is only cold climate, you can't do it. This is very risky, you can't go. And those people are also holding good varieties with them. They doesn't want to release to the. There are so many varieties like that. Then I somehow brought varieties, had grown. I think you have visited our farm. It was doing good. Like that, see, now once we talk of hydrangea, 10 growers come into hydrangea. It's not like that. There are so many varieties. Calla lilies, hydrangeas, proteas, cymbidiums. There are so many varieties which are having high potential values. Now if you go to the northeast, if you can take the climates, Himachal, up the Ooty le lo, Kodaikanal le lo, you talk of any Thanda area. There are so many varieties where you can focus. People are still, the message is not there. Our departments, our governments need to see, everybody wants someone, you are doing something. Someone want to carry this message and do something. They don't want to work. You have put a lot of efforts to create something, share this information. But that information, some of the government officials also has to work and reach it to the farmer, basic farmer. That information sharing is not happening in India. Right. And whoever want to come into this sector, think in that way. Let us not restrict yourself to 2-3 varieties. अरे हमारा किस एरिया में जमीन है? Should I go with the flower? Should I go with the vegetables? आज vegetables भी कितना हो रहा है? See, Dubai requires lot of Indian vegetables. Where are we producing? Okay. तो ये आप कह रहे हैं जो नया ग्रोअर है, focus on the newer varieties. Newer varieties. There are so many varieties are there. You can see, don't restrict yourself by seeing one of my gerbera video or one of my carnation video, or you have the world. You go to the world. When you are putting so much of money, you grab the variety, take your climatic conditions, soil conditions. Either you have to go with the soil or with the soilless cultivation, and what varieties you need to focus, you go on that. Then you can see the success. Blindly don't go with the one opinion, because there is a lot of investment which is required. See, our Prime Minister was saying most of the thing when we see doubling of our farmers' income. He mostly goes agriculture में I have to हमारा किसान को doubling of income. Traditional farming में तो नहीं होता है. Technology लेना पड़ेगा. Technology लेना है तो if you want to see double income लेना है तो you need to invest something. When you thinking of this sector, this greenhouse technology, agriculture में upgraded, net house भी रहने दो, greenhouse भी रहने दो, you are investing something. There is a potential. Invest on that and reach to the markets. Basically, before getting into agriculture, पहले समझो कि newer varieties क्या है. What are the newer varieties globally? Yes. Because like you mentioned, it is very capital intensive. लोग को लगता है कि agriculture is cheap, but if you want to be successful, you have to invest some amount of money. To get a return on capital, right? So see the world, see the newer varieties, focus on that. So now let's say मैंने variety decide कर लिया, I've decided the variety. So what is the next step? Do I have to source the seeds?
टिश्यू कल्चर लैब, कैसे वो थोड़ा समझा सकते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नहीं, प्लांटिंग मटेरियल तो टिश्यू कल्चर है. नाउ नन ऑफ आवर वेराइटीज डायरेक्ट सीड से आप लोग? सीड से भी कोई वेराइटीज है. अभी पैन अमेरिकन, व्हेन वी वेंट टू कोलंबिया वी वर सीइंग देयर आर वेराइटीज व्हिच पैन अमेरिकन सीड्स, Sakata seeds from Japan. Okay. They are only doing some flowers with the seeds like Celosia, Snapdragons, Mechola, Dianthus, Limonium QS. There are many varieties in the seeds also. They're doing directly from seed. Seed to plug production Plug and production. to the farm. Got it. You see, that's what you do. When we got this information, when we have traveled, we learned. There is no person to give. That is what I most of the time I request our organizations like IHR, GKVK or our ICIR, these institutions. We are spending, central government is spending so much of money in developing so many things. The scientist, I only beg and request our Indian scientist. The varieties which we are growing in the industry for last 3 decades, I am saying, it's all imported varieties, which we are dependent on Colombia, which we are dependent on Europe, Israel, Italy, all the other countries. None, one single variety, if anyone can challenge saying that this is the variety made by an Indian, we are still, see today where are we? Our vision of our Prime Minister, we are making locally so many varieties, so many things. Make in India. Make in India. We are being exposed to the world. Today where are we in this last 10 years? We have developed something. If you compare with the thing, we have been exposed to the world. Now today, as an Indian, I go to any other country. From India, wow. I didn't get that feel before. But now people are been wanting Indians to come into the world. And we are being identified. Any sector. Like that, I request all our professors and scientists, if you can start working on making our local varieties and supporting our Indian farmers. This is one of the industry can double the income is one word, but I can say 10 times of the income anybody can make. And if you are a serious grower. I think a lot of investment R&D is needed. Yes, that only governments can do. Anyway, they are putting into research lot of variety thing. As a farmer, how can I do? If I want a variety, if I want a technology, I have to go to ABI. If I want to get some technology, I have to get from the ABI. If ABI can't do, I have to search someone. Only the source is as a farmer. I'm not getting in India. I'm getting imported from there. There are so many tissue culture labs which has been doing the plants in India. They are developing the and what is the revenue getting out of India? What is what are we supporting to our economy? If we can do all this research in India and give some varieties and do focus on the research, will help lot of farmers. And India in after 10-20 years, you mark our words, today the whole focus of European countries is on India. Everywhere, and we have a lot of potential in India. They say India is a gold mine right now. Yes, it's a gold mine. It can be a floriculture mine also. Yes, because it has a good climatic conditions. You have a very good climatic conditions throughout our India. Good light quality, everything. Yeah, everything is there, and labor is easily available. Water quality is good. Climatic condition. You need to select the areas, and when you focus on this thing, we will have an export market open for us, and where we can do better and better for the ourselves and for the farmer community also can get to the vision of our Prime Minister. Understood. I think abhi issue kya hai, sir, what a lot of people think that to produce the export quality flowers, इन्वेस्टमेंट इज टू हाई, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, राइट? तो उनका माइंडसेट है कि मैं सस्ते में करूं, सस्ते में बेचूं, राइट? तो आप एज अ ग्रोअर अभी करंटली कहाँ बेचते हैं? लाइक एक्सपोर्ट मार्केट इज ऑल्सो अ बिग पोर्शन ऑफ योर सेलिंग? नो, आई विल टेल यू. सी, द क्वालिटी, because the volumes are not to that, and we are not, see anything what happens now when you talk of Thailand में गया तो वर्ल्ड को क्या होता है, ऑर्किड्स इज बीन प्रोड्यूस्ड इन ए बिगर वॉल्यूम. अरे वो जिधर वॉल्यूम मिलता है उधर थोड़ा सस्ता भी मिलता है एंड वॉल्यूम मिल जाता है, हमको जितना चाहिए वो थाईलैंड में. व्हेन यू थिंक ऑफ मलेशिया, पीपल थिंक ऑफ क्राइसैंथेमम. व्हेन यू थिंक ऑफ हॉलैंड, they think of new varieties, tulips, cymbidiums, hydrangeas, like that. They kept all the cream with them. And when you think of Nairobi,
mass volume of roses, carnations, Okay. like that. When you think of Colombia, carnation, means every country has made that impact to the world. We have not created for an export market such a big world. And quality, yes, you have to, if you are doing an export, your R&D and your practices, whatever you are doing in the farm, the quality has to be to the standard of the world market. When you are not exporting, what happens to the farmer? अरे भाई हमको तो क्या इधर भी जा रहा है तो सेटिस्फाइड रेट मिल रहा है, इंडियन मार्केट में भी हमारा शादी में गए तो भी हमको बस है. करेक्ट. बिकॉज ही इज नॉट ऑल्सो एक्सपोज. नो, वो देखा ही नहीं दुनिया ही नहीं देखा. उसका गांव से जाके यू वांट हिम टू सप्लाई टू यूरोप, हाउ डज ही गो? गवर्नमेंट ने क्या, एनएचबी ने क्या किया है, एक फैमिली को 1 हेक्टेयर का स्कीम लेके आया, 1 असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आपने अभी यू आर इनटू ए डिफरेंट सेक्टर, योर फादर इज इनटू एग्रीकल्चर एंड यू आर इनटू सॉफ्टवेयर, लेट अस अज्यूम. देन व्हाट यू विल टेल, अरे मेरा फादर ने एग्रीकल्चर में है, आई हैव टू कैरी माय फादर्स ट्रेडिशन. करेक्ट. बट आई विल नॉट डू द ट्रेडिशनल फार्मिंग, आई विल डू ए टेक्नोलॉजी फार्मिंग. Then your focus will go to how do I start? True. Then you have your own land, then you will focus अरे कैसा करना. You go to the horticulture वाला बोलता है हमारा NHB में स्कीम है. You go there. You have left, you have been paid for 1 lakh or 3 lakh per month salary. You left the job, you are coming to the sector with a high hopes. You are restricted to 1 hectare. Okay. So more than 1 hectare, what happens? You have to invest. Okay. See, 1 hectare, 120 lakhs is the project cost. उसमें 50 lakhs is what they give. And if I do 2 hectares, then उसपे No. 1 crore नहीं होगा. What I suggest the government is, a successful farmer is a roadmap to the any community. Any business you take, you will not talk about only the farmer. You take any person business में सक्सेसफुल होता है, वो रोड मैप बन जाता है, दूसरा लोग पीपल कॉपी हिम एंड फॉलो. एंड इफ यू टेक अ होल इंडिया, द सक्सेसफुल फार्मर वुड बी 1% or 2%. वही तो नोशन, एवरीवन थिंक्स farmers are failing everywhere. Failing because the policies of our governments. You tell from the state, बोलता है एक घर को 1 acre का सब्सिडी देगा. You are attracting him and you are forcing him to get into the business. And his volume is not super. अरे उसको जो 1 लाख रुपए जो काम कर रहा था, उसको छोड़ के लेके आके इधर छोड़ दिया है. ठीक है, वो सब्सिडी दिया है उसको काम करने, बट दैट ऑल्सो शुड सेटिस्फाई हिम. इफ यू हैव दैट वॉल्यूम ऑफ थिंग, then only then he can be satisfied for his income. So basically, just to clarify, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो 1 एकड़ पे ही दे रही है. अगर मुझे 10 एकड़ का प्रोजेक्ट करना है तो मानो 1 एकड़ पे मुझे 20 lakhs 25 lakhs के आसपास. स्टेट गवर्नमेंट का 16 lakhs 50,000 है. इफ यू आर गोइंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट NHB, you get 50 lakhs. That is the maximum. 50 lakhs for how much area? 1 family, 1 hectare. 1 hectare. That is उसका about. ज़्यादा करना है तो you have to invest. What we are requesting to the government is, let one project a farmer install. If he is a successful farmer, if his project 1 is success, give him a 2. If his 2 is 1 and 2 are success, give him a 3. 1 to 3 is success, give him a 4. He will be a roadmap to the industry. Correct. Everybody you are giving, because everybody can't come and put so much of money. A successful person, this policy was there 3-4 years before. I don't know, they brought back this. The whole industry has been suppressed. A new expansion doesn't happen. The energy levels or the industry doesn't grow. Do you use subsidy, sir? आप use करते हैं अपने farming में? I was being given. That is how I have grown. There was an assistance by the central government, NHB. I have got the NHB subsidy. I got the state subsidy. But only for that limited amount. No, when I have done the structure, I was being given 2-3 times. That is why, see, a farm basic with small investment and buying land from the business, and without the central government subsidy, I would have not grown so much. With the state government supports, I would have not grown so much. Horticulture departments are doing good, but still little fine tuning to be done to change their policies. Because now we are thinking, all these days we are in the domestic level. Now we are thinking on the international level. Let our farmer get that vision of expansion.
गांव में वो 1 एकड़ से उसको 2 एकड़ करने दो, 2 एकड़ का आदमी को 4 एकड़ करने दो. Let that assistance keep on going. See, the such a 140 crores हमारा population है. 100 crores of budget or 200 crores of budget, does it is a burden to the agriculture, to the floriculture? Why can't we spend? Today, a farm, today I would have started with the flowers. Okay, I may not be successful in flowers due to some reasons. I may think of vegetables. The infrastructure is the same. Similar, yes. If you and today when we I think you are not there in that visit. We have visited Vietnam. And I have seen, I will send you some pictures of Vietnam. If you see, to the eyesight, it was all greenhouses. Once you stand there on the higher position, once you see hundreds of hectares, thousands of hectares of greenhouse, then we have gone to there walking. Everything, any crop you take, banana is grown under greenhouse, you take lime, it is grown under greenhouse because of the climatic condition. Why are they successful? Because their climatic conditions, if they don't do that protected cultivation, they don't get crops. Their climate condition is not suitable for an open field. True. They have done a protected cultivation and they are very successful. They are doing lime, guava, banana, anything you take it on the greenhouse. Government supports there also? Yes, there is a support. There is a support. Wherever the assistance required, I have traveled to the most of the countries. Developed countries are also been assisting the farmers. And only these are the technologies can help a farmer to upgrade his thing. आज बहुत जगह होता है, when I go with a good pant and shirt, nobody recognize me as a farmer. Do you want all the farmers of India वो धोती और वो पुराना कपड़ा पहन के ही जीना है क्या जिंदगी भर? Are we not recognized as an entrepreneurs? That's the mindset change which is necessary. First necessary, sir. Accept a farmer. अरे वो कुछ अच्छा शर्ट खरीदा है तो you should be happy in receiving him saying that अरे हमारा farming sector improve हो रहा है. You should be happy. अरे एक बार उसको देख लिया तो क्या रे तुम अच्छा कपड़ा हाँ. That is the mindset you need to come out. Accept the people as they are. True. So sir, let's थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्रॉफिट सब्सिडी, राइट? मोस्ट लोग यही इन्फॉर्मेशन सबसे जानना चाहते हैं. 1 एकड़ मानो मुझे ग्रीन हाउस करना है, जैसे आपने 120 lakhs बोला, आई थिंक दैट्स फॉर लार्जर एरिया. 1 एकड़ में इन्वेस्टमेंट कितना होता है, फिर आपके ऑपरेशन कॉस्ट कैसे आते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर रोज ग्रोइंग का एग्जांपल लेके समझते हैं. फिर आपके उसमें प्रॉफिट्स क्या हैं हो सकते हैं पर एकड़, एंड गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप. सर 1 एकड़ में जैसे गया है तो ग्रीन हाउस का इफ एनी बेसिक विलेज से एक फार्मर 1 एकड़ करना चाहता है, ही वांट टू स्टार्ट हिज फार्म विद अ रोज. स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है उसको 16 लाख रुपीस इज द सब्सिडी. 16 lakh rupees from the state government. स्टेट में ग्रीन हाउस का आई थिंक अराउंड 32 to 35 lakhs समथिंग ग्रीन हाउस का बनाने में हो रहा है. एंड प्लांट्स, रोज प्लांट्स 40,000 प्लांट्स बोले तो एक 6 लाख रुपया उसके लिए होता है. एंड सॉइल प्रिपरेशंस, इरिगेशन रूम, पैकिंग ऑल, ये पूरा पकड़ के 50 to 55 lakhs तक उसको 1 एकड़ बन जाता है. उसमें से 16 लाख रुपीस, 16.5 lakh rupees will be a state government assistance to do that thing. So 1 acre 50 to 55 lakhs is the investment. And उसका प्रोडक्शन जैसा आएगा रोजेस को आफ्टर 4-5 months जैसा उसका प्रोडक्शन चालू होता है, you get an average of 1,800 flowers to 2,000 flowers production. Okay. If you are doing a good quality growing, you get a consistency of an annual average of 2,000 flowers भी पकड़ लिया तो 60,000, 7,20,000 flowers per annum. Today मार्केट एवरेज सेलिंग ऑफ इंडियन डोमेस्टिक मार्केट का 6 रुपया का एक एवरेज है. 6 रुपये पर रोज. 6 रुपया भी ले लिए तो अराउंड 7 lakhs into 42 lakh rupees is the revenue which you can generate. And the running cost
पर एकड़ आज का इसमें कुछ नहीं है तो भी 1,80,000 to 2 lakh rupees तक रनिंग कॉस्ट चलेगा. रनिंग कॉस्ट मीन्स लेबर, फर्टिलाइजर, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस थिंग, एनी अदर थिंग. उससे ज़्यादा ये थोड़ा इंटरेस्ट, ये पूरा जो भी फीस टेकन है लोन, वो पूरा जाने से एक 10 लाख तक आने का चांसेस है फार्मर. प्रॉफिट 10 लाख रुपए ग्रोइंग रोजेज इन अ ग्रीन हाउस पर एकड़. बट ये साल जैसा हम पहले जैसा बोला है, देयर इज अ स्लम्प इन द मार्केट. थोड़ा एक्सेस प्रोडक्शन है. बहुत सारे लोग कोविड के बाद में रिव्यू किया है प्रोजेक्ट्स को. वो आने के बाद में द फोकस इज मोर ऑन द रोजेस. द प्रोडक्शन ऑफ रोजेस इज मोर. ओके. एंड द एवरेज दिस ईयर इज गॉन टू 5 rupees. 5 rupees per flower. वो गिर गया. वो अभी 35 लाख. अभी इस साल का ग्रोवर का परसेंटेज ऑफ इनकम शुड गो फ्रॉम 6 to 7 lakhs. और वो बीच में मिलना चाहिए. बट ये साइकिल में होते रहता है. वी शुड ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव दिस थिंग, बिकॉज you have to maintain your plant quality and all those things. You will not, if you are doing in a right scientific way, 5 to 10 lakhs doesn't go anywhere. Understood. There are situations, if you can export better, there are farmers who are doing better than these figures. This is the average I'm talking about. And now अभी जैसे Valentine's week and Valentine's season चल रहा है. Yes. Right? तो इसमें कैसे इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा डिमांड होता है फ्लावर्स का, फ्लावर बिजनेस का, सब चीज़ का. How do the numbers change इस समय पर? Do the profits and the volumes increase at this time? Yes. Most of our farmers, what they're doing for this Valentine, they plan to get more production. Okay. वो कटिंग दे के ये पीरियड में प्राइसेस अच्छा रहता है, एक्सपोर्ट्स का भी मार्केट अच्छा रहता है. You have to get a major production because this is the season where they can get, आज के एवरेजेस में 10 से 12 रुपये तक फ्लावर मिलने का हायर चांसेस है. इफ यू आर एक्सपोर्टिंग 15 to 20 rupees per flower. These are a very high chances of getting those money. ये टाइम पे प्रोडक्शन रहने से you get that bigger money. There are months 1-2 रुपये पे भी आने का महीना रहता है पर फ्लावर. बट ये जो प्राइसेस ज़्यादा रहने के टाइम पे प्रोडक्शन ज़्यादा रहे तो फार्मर का सक्सेस ज़्यादा हो सकता है. एंड जैसा डोमेस्टिक मार्केट में भी वैलेंटाइंस तो आज इट्स अ फील ऑफ लव. आज जैसा बात कर रहा है, you need to express all the young generation now. कैसे even you sir, you should also give your wife. Yes, everybody today, either a wife or a sister or a mother, you have to express your love. Why Valentine's Day is only for a girlfriend? Why can't it to your mother? Yeah, fair enough. You have to start with your mother, to your sister, to your wife, to your anybody. You only express of feelings. True. Express it with the natural flowers. Use real roses. Real roses. And that is how this industry has started. The energy of getting into this industry, into India has started with the roses, with the Valentine's, expecting people. That is how now people are taking this technology. Now people are doing many other cultures. True. Strong message to the audience ki give your partners roses, flowers, but make sure that asli rose they do, not fake and artificial flowers. Yes. I always say that. Now we are strong believers, because I'm not see, once you go to the farm, when you see that natural flowers, whatever you have the stresses, I'll tell you Abhi, now you are in the age of around 20 plus. Now you go, you have a lot of stress, you keep a bouquet of flowers, fresh flowers in your room next to your bed or in your hall. Whenever you have stress, you just have a look at it. Instead of going for a tablet, stress relief tablet, you keep some fresh flowers. You see your mind is being diverted, your stress is relieved. It's a natural way of relieving your stress. Plants are living creatures, na sir? Yes. बहुत सारे लोग वो भूल जाते हैं कि plants just like us are living creatures. Yes. And it changes the whole ambience of the environment you are in. Sir, you go to any of the villages, you go to any of the world,
You see the houses, indoor plants, indoor flowering, indoor anything natural. Now only the artificial things are coming. Otherwise, our lives have started with the natural. You need to have that natural things in the house. Understood. And the countries which have been getting from China has been dumping lot of artificial flowers and creating lot of environmental problem to our Indian health issues. Why is this cancer and why is this health issues? I say this is also one of the part of the thing. We are spoiling our environment. Excessive use of plastic. And used plastic which is being made for this synthetic and from artificial. China. From China. China is the biggest export to our country. So you should ban China for artificial flowers. Yes. See, once you take a issue of invoicing on artificial flowers, people are invoicing at synthetic flowers. And synthetic flowers you take, tomorrow what they will do? They are getting their big, strong muscle. Their muscle power is big. So you And think our strength is not support. Our sector is small. Our voice need to manufacturers आके growers को दबा देते हैं Yes. basically. be. It's a very big money for them. Hmm. वो किसान में उसको पानी नहीं देना चाहता है, एफएम नहीं डालना पड़ता है, वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना पड़ता है, ग्रीन हाउस नहीं डालना पड़ता है. एक छोटा सा फैक्ट्री लगाओ, बनाओ, लाखों फ्लावर कर सकता है ना. हम 1 हेक्टेयर से यू ओनली कैन प्रोड्यूस 1 एकड़ से 7 लाख फूल ले सकता है, बट वो 1 एकड़ से 70 लाख फूल निकाल सकता है ना. मशीन और ह्यूमन में अंतर है. राइट सर, एक चीज़ मैंने देखा बहुत, मतलब कभी भी मैं रोड पे जाऊँ या चर्च स्ट्रीट में बैंगलोर में आप जाओगे, Yes. वहाँ you'll always see these kids walking around with roses. Yes. And you'll go on the road. The other day I actually opened my window. मैं आज से पूछा, आप ये क्यों बेच रहे हो रोड पे फूल, कहाँ से आपको ये आता है? बोलते हैं मुझे लोग पकड़ा देते हैं और मैं रोड पे से 10-20 रुपए पर फ्लावर बेचता हूँ. राइट. Yes. तो मुझे वो सुन के लगा कि प्रॉब्लम है, लाइक इट्स एन इशू. ये फ्लावर आप वेजिटेबल से जैसे देखो, आप हर सुपर मार्केट में जाओ, आपको वहाँ सब्जी मिलेगा ऑन द काउंटर, आपको ऑनलाइन रिटेल्स बहुत मिलेंगे, ब्लिंकिट, स्विगी, कुछ भी हो जाए. बट फॉर फ्लावर्स एज सच वो मार्केट प्लेस का डेफिनेशन अभी तक आया शायद नहीं है. नहीं है सर. नाउ आई रिक्वेस्ट मोस्ट ऑफ दिस सुपर मार्केट्स और दिस the name you are saying, the Blinkits and all these companies can get tie up with the farmers. We were talking on the Colombian thing also, farm to the hearts. These concepts need to be developed in a bigger way. Now the farm, if any of the supermarkets come forward, a farmer can make, you can give a small basic technology designing what these online companies like this Blinkits are. If that can be developed, a small education, if it can happen to our Indian farmers, they can make that product. Or if the markets get created, can be supplied to this thing and it can reach to the many of the homes. We are still thinking, either you you all can think over, get the concept. I think that is a very big thing to reach this natural flower to the hearts. Marketplace. बट अभी लाइक yesterday, जैसे कल मैं देख रहा था ऑनलाइन, जस्ट आई वाज जस्ट रिसर्चिंग, बहुत सारे कंपनीज हैं जो ये वैलेंटाइंस डे के रोज सब बेच रहे हैं बुकेज, लाइक 52 फ्लावर्स, 100 फ्लावर्स, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. लाइक यू विल बी, आई वाज शॉक्ड टू सी कि वो एक एक चीज़ 3,000 4,000. सो हाउ आर दे डूइंग इट? आर दे एडिंग समथिंग टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ? कर क्या रहे हैं? क्योंकि नेचुरल फ्लावर का तो वो कॉस्ट है नहीं, शेल्फ लाइफ रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं आपके रोजेस के. See, once they want to make a bouquet, flower is one of the cost. They have to make the arrangement. For them also, the manpower is a cost, delivery is a cost, everything they are adding, and that is the season where they can also make some flower. Valentine means it's everybody's day. A retailer's day, a wholesaler's day, a grower's day, and a lover's day. Right. It's everybody's day. Everybody is only focused for that particular day, and you need to make some good money out of it. Everybody, that pricing is been fixed for those days. It's like a festival for the flowers. Understood. Yeah. Right. So where are you selling your flowers? अभी आप कहाँ बेच रहे हैं? Like, see, as I told initially also, I am not based on one market. You have positioned yourself in different markets. Different market. Today any customer calls me from anywhere in the Indian market or anywhere in the world, we are ready to deliver. Any small city also, the connection is there, bus connection or a train connection or a flight connection, we are delivering to everybody. That is how any farmer has to do to see their success. How do you do that? कैसे build करें उसको?
No, that happens. See, once you are there, see, today I was talking initially also. Now today we have come to 28 years in this industry. The customer, our flower availability, quality, it goes to the markets. You get a calls from Delhi, you get a calls from Udaipur, you get a calls from Jaipur, you get Bombay, Hyderabad, Calcutta, second tier cities, third tier cities. Every city you get that spreading. Once you get the people call from us from there. I have a wedding, I have a birthday functions, I have a events. And when we are talking about all these things, now recently which has happened, Rama Janmabhoomi, Ayodhya. And we were surprised. That was a huge volume. So a lot of flowers went from South India. Yes, Bangalore was an hub to supply Bangalore and Pune flowers. You see, all the farmers who have been produced at that particular week is been shipped to that. In that, I was also a part of it. I feel very proud. I again want to say proudly, it's a feeling. See, Shrikant sir's flower reached Ram Mandir. Yes. See, I have still not gone for darshan. I didn't get a blessing to go. But I am happy saying that my flowers which has been produced from my mother earth in my farm, which has been produced, are there in the Ram Mandir. I will go for darshan someday. But still my flowers are been there. That happiness, the natural flowers, the volume of fresh flowers. Let's talk a little bit more about Ram Mandir ka flowers. How much flower was used? Any idea? I really doesn't know the exact figure. How much did you send approximately from your... I have dispatched around 5 lakh stems of cut flowers. Which all flowers? We have sent roses, we have sent chrysanthemum, we send gypsophilia, we send limoniums, we send celosias, we send hydrangeas. Wow. The value of flowers which I sent from my farm is around 70 lakh rupees. From a single farmer? Single farmer. I feel my percentage is 30-40%. Like that, there are so many farmers who have been, the decorators have taken from different. And apart from the cut flowers, there have been loose flowers, gende, that marigold is being used. And other loose flowers. Genda, right? Genda. They have been used. Samajh gaya, understood. There are they have done it to the, that is why, to spread the positivity, blessings. I'm sure nobody used. वहाँ पे fake flowers किसी ने use नहीं किया. No. भगवान के नाम पे. I still say people have trust on Bhagwan. Still they are using fresh flowers in the temples. None of the temples, till to my knowledge, are using artificial flowers. They are only with the fresh flowers. Only industry को आज थोड़ा अच्छा support मिल रहा है. Is one of the biggest support is from the temples anyway. You take Balaji temple from Andhra. You take Tirupati. You take Vaishnavi Devi temple. You take now Ram Mandir, or you take Tamil Nadu temples, any of the temples, or you take Kerala temples. Everywhere, churches. This is how you need to develop the culture. One festival day. Festival is what? Not only wearing clothes. You decorate your houses with the flowers, greet with the flowers. That is how you need to spread your messages, your feelings. I think flowers are an emotion, a sentiment of love. Yes. Like even for me, like मैं कभी fake flowers use नहीं करता था, but जब तक floriculture, agriculture को देखा नहीं, like I didn't understand कि the real sentiment, the real effort. When I see farmers like you and everyone around the world, it's a lot of work. नहीं, fake flowers जैसे बात कर रहा है. आज आप बर्थडे कर रहा है तो एक fake केक से आपका बेटी को केक कट करवाएगा? करेगा? Same, fake vegetables भी नहीं खाओगे. आप बोल रहा है आप इतना अच्छा आदमी है, कोई किसी से मिलने के लिए, आपका गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए फेक स्माइल से आपका गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकता है? When you want everything in natural, why only some part of things fake में क्यों जाना चाहता है? अरे 10 फूल नहीं दो, 1 फूल तो दो फ्रेश फ्लावर से. लोग का कहना है कि मैंने दो एक्सक्यूज सुना है. एक है कि नंबर 1 शेल्फ लाइफ नहीं बनता है फ्लावर्स का, तो हमेशा चेंज करना है. दूसरा, मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि उसको पता ही नहीं है कि वो फ्रेश फ्लावर्स ले कहाँ से. तो मैं अब कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो आप लोग बेचते हैं फ्लावर्स, राइट? सो दे कैन एनी लोकल मंडी में जाकर, या अब नाउ अ लॉट ऑफ ऑनलाइन रिटेल लोग भी आ रहे हैं, कई सारे, लाइक ब्लैक ट्यूलिप आई थिंक वन ऑफ द कंपनीज, दे आर डूइंग ऑनलाइन रिटेल, राइट? सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट. फार्मर्स का कभी भी कॉन्टैक्ट चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम. They will supply fresh flowers, right? Yes. There are so many, sir. There are so many people who have been there. Now, once you Google it, I think now hundreds of people can supply you fresh flowers. Now, for farmers also,
in Bangalore, there is an international auction flower center, IFAB. Farmers who have been producing, they can bring their flowers and sell there. And IFAB also, anybody can come and buy. This happens how often? It's every day, 365 days an auction center. Okay. It's there in Bangalore, in Hebbal. Any person who has been there from, now we are going to online, make it online. Abhi now, dhire it's getting online. So it become more accessible to accessible to the people. People sitting in Delhi or sitting in Gujarat can buy from there. The flowers will be shipped from here. But usme shelf life doesn't get affected? No, every flower has its own shelf life. Okay. The quality parameters need to be controlled. The packing, handling, this will be taken care. Understood. Right now, along with flowers, you do some vegetables also, like capsicum, for example. Yes. I think South India and Bangalore as such, the weather बहुत allow करता है, बहुत सारी चीज़. Yes. क्या temperature है, everything suits growing as such, right? Yes. So how is capsicum growing been for you, and इसके क्या economics होते हैं अगर किसी को start करना है? Sir, capsicum, Bangalore ऐसा अब जैसा बोला है, climatic conditions are very good. When the other part of the country, when they can't grow capsicum, Bangalore can produce. In the summer is the when you take it to Himachal or you take it Punjab, where the people UP side, when the people are growing at this part, October, November, December, January, February तक वो लोग grow कर सकता है. Their climate will not support them to grow in the April, May, June thing. Okay. Those time the production is only available from Bangalore. April, May, June. April, May, June, July. वो टाइम पे जो समर का टाइम है, पीक टाइम में, मार्च से पकड़ के, एंड आवर पीपल हैव कम आउट विद बैंगलोर अराउंड से come out with a net house technology. Apart from greenhouse technology, लो कॉस्ट में नेट हाउस भी कर लेके. नेट हाउस क्या हो सकता है, थोड़ा समझा सकते हैं? नेट हाउस इज द शेड नेट से आप लोग करके सपोर्टिंग सिस्टम, उसको क्रॉप सपोर्टिंग सिस्टम लेके कैप्सिकम करने के बाद में 90 डेज में प्रोडक्शन चालू हो जाता है. मल्चिंग शीट वो पूरा डाल के 90 डेज में आ जाता है. ओके. एंड बाय इन्वेस्टिंग अराउंड 10 to 12 लाख रुपीस ऑन द नेट हाउस में आप इन्वेस्ट कर लिए तो, एंड उसी में भी आई थिंक गवर्नमेंट हैज सब्सिडीज ऑन दैट. एंड आज हम लोग को हम उधर इधर देखता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू वो ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही है. कैप्सिकम वो लकड़ी के साथ में करे हो, वो हवा है तो उधर गया इधर गया. एंड व्हेन यू डू विद दिस प्रॉपर शेड नेट हाउस में बारिश से ये नहीं होता सर? बारिश वो टाइम पे होता है बट डजंट अफेक्ट दैट मच, बट इट हैज लॉट ऑफ एरिएशन. वो एरिएशन रहने से कैप्सिकम, टमाटो ये पूरा अच्छा करके we have been doing now this year. I have put 10 acres of capsicum in the net house. 10 acres? Okay. 10 acres. And we are expecting, last year also we are doing around 30 to 40 tons per acre of production of capsicum in the net house. Per acre? Per acre. And वो टाइम पे थोड़ा प्राइसिंग भी अच्छा मिल रहा है. 70 to 150 रुपीस का बीच में पर केजी. 150 रुपीस पर केजी. देयर आर फ्यू डेज व्हिच गोस अप टू दैट लेवल. कोई डेज है 50 रुपीस भी मिला है, बट यू विल हैव दैट साइकिल ऑफ थिंग्स. ये कहाँ बेच रहे हैं सर आप? सर मोस्ट ऑफ द कैप्सिकम फ्रॉम बैंगलोर इट गोज टू दिल्ली, इट गोज टू कलकत्ता, इट गोज टू बांग्लादेश, इट गोज टू हैदराबाद. Most of the major cities, Bombay भी जाता है. It goes from here. There are people who buy from us and they send it. And actually initially there was been exporting it to Dubai and all those things. Okay. But because of the freight, there is a bigger challenge for anybody in the flowers or in the vegetables. The freight has been increased after COVID 2 to 3 times, and they imposed GST on the freight. That is a bigger challenge for anybody to export. That is how the exports are coming down. I think government should work on the GST part for at least agri products, which has been exporting, to take off the GST thing. Then I think more products can go into the international market and compete with the growers or the markets there available. So April, May, June, July is a good time to go capsicum, especially in the South Indian belt. In the net house. In the net house? Yes. Because net house provides better aeration. I'm just quickly revising what you said. Yes. And because the other parts of the country are not able to produce. वहाँ पे temperature उस समय ideal नहीं है. Yes. तो आपको वो price advantage मिल सकता है. Yes.
So 150 rupees per kg is the maximum, Yes, and 30 to 40 tons आपने बोला per acre per acre you can. produce. Wow, that's good volume. Yes, and other part of the time you still can grow in greenhouse in the rainy time. This June, July, August, September, October, November also can be grown. In Bangalore, round the year you can produce any of these product. You take as a flower, you take it as a vegetables. White tomatoes also shoot up at the time in the May, because the other part of the world you can't produce because those people are not able to use the technologies in a right way. The adoption of technology from the other part of the side of the country is not able to take it. वो नहीं ले पा रहा है, वो लोग ओपन फील्ड में ही जा रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो टेम्परेचर्स को कोई किसी से डिस्कस करे तो ना बोलेगा क्या चाहिए उसको. दैट डिस्कशन लेवल इज नॉट हैपनिंग. कोई फ्री में अब आके बोले तो उसका लालच है बोल रहा है. इधर यू शुड नो इट, और कोई बोल रहा है तो सुनो. सुनने के लिए भी इंडिया में आपने बोला था स्टार्टिंग में बी अ गुड लिसनर. अगर इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कांट बी इनटू द एग्रीकल्चर. अरे कोई आके टेक्निकल, अरे भाई तुम एक काम करो अच्छा रहेगा, बोलेगा अरे ये तो हमारे ऊपर कुछ वजन डालने के लिए आ रहा है. अब सुन के क्या बोल रहा है, क्या है, थोड़ा ठीक है. यू डजंट वांट टू डू बिग, स्टार्ट विद समथिंग. आपको कुछ आ रहा है तो यू नीड टू डू दैट अपग्रेडेशन, नो, देन ओनली योर इनकम कैन ग्रो. हम ट्रेडिशनली करेगा, हमको ज़्यादा चाहिए, मेरे को भगवान नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, ये नहीं, कौन देने वाला है? भगवान भरोसे मत रहो. हाँ, किसी का, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ. Until unless you upgrade, you implement, no growth can happen. Understood. थोड़ा सा आई थिंक समझना चाहता हूँ अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग, राइट? किसी भी ग्रोइंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम टेक्नोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट, फर्टिगेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ जो एज अ ग्रोअर आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, राइट? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स की पीपल शुड कीप इन माइंड? मैं अभी ग्रोइंग में आ रहा हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं. जैसे आपने पहले भी बोला, यू कैन हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी बट यू स्टिल नीड टू बी अ गुड ग्रोअर. Once you get into your greenhouses, you feel comfortable. If your humidity is more, you are feeling suffocated. Then when you are not able to sustain in the greenhouse, your plant also doesn't. And what need to be done at that time? It requires aeration. How do you increase aeration to reduce your humidity? Those are the aspects you know. There are side curtains on the greenhouses where you need to take off. The aeration should flow. Or if that is not sufficient, add a fan to that air circulation fans. See, this doesn't cost much. But people, हमारा अरे भाई श्रीकांत भी ग्रीन हाउस डाला, मैं भी ग्रीन हाउस डाला, श्रीकांत भी ग्रो कर रहा है, हम भी ग्रो. बट श्रीकांत has added some value added in there. वो कितना क्या देख रहा है, ग्रीन हाउस में क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो माइक्रो क्लाइमेट क्या चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, एंड व्हाट टाइम ऑफ थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व योर पेस्ट मैनेजमेंट. इनिशियल में कैसा रहता है, you need to have that practical experience. Only when you are there with the plant you will understand. There is no theoretical answer to this. There is no, see, today what we have done a process might not be applicable for tomorrow. There is a change. Today the pest is in one greenhouse, इसमें अभी humidity ज़्यादा हो गया, you get some pest. The other greenhouse doesn't have that humidity, that aeration, direction of aeration उधर ज़्यादा आ रहा होंगे. There you might not, but this same formula you can't implement on the other greenhouse. Understood. So how like if I'm growing, so you're saying I can learn, मैं करके ही सीख सकता हूँ. Yes, करके सीख सकता है. And you have a problem, share your information, I have this problem. There are many people in our industry to guide you. But you have that ego. हम ही बड़ा है, हम किससे पूछना है? Agriculture में egos are not accepted. Nobody is best in the world. Every day is a learning day. Nature is the best. Nature is the best. You have to learn. You have a problem, express. अब डॉक्टर के पास गए तो सारा नहीं बताया तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे जाएगा? अभी मैं श्रीकांत हो गया, 30 साल हो गया, हम इतना आ गया, टुडे आई एम डूइंग गुड. अरे भाई मेरा प्रॉब्लम नहीं है बोल के नहीं,
I invite a lot of people. There are people who comes from around the world. They come. I take them to the greenhouses. क्या problem है? I learn. Still we learn, and still I travel to learn. Agriculture में कोई ऐसा बोलेगा अरे भाई I am the best. His ego has started. His downfall has started. कोई best है ही नहीं. You are not 100%. Nobody is 100%. Agriculture में हो ही नहीं सकता है. कोई भी टेक्निकल पदमी आके सर मैं करके दिखा सकता है. आई एम द बेस्ट बोल के दिखो. प्लीज आई विल गिव हिम 1 hectare ऑफ थिंग. लेट हिम कम टू द थिंग. लेट हिम शो व्हाट बेस्ट ही कैन डू. It's a process of thing. See, you might be the best. Nature can't be to your favor, no? There are challenges which comes. There are so many challenges which comes which will be out of your control sometime. You need to manage the things to get into your best. True. Okay, sir, एक और मतलब लोगों को क्यूरियोसिटी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया अबाउट सॉइल एंड सॉइललेस, राइट? सो यू सेड कि थाईलैंड में बहुत सारे वेराइटीज सॉइललेस में हो रहे हैं. यस. एंड मैंने एक रिसर्च एंड आर्टिकल पढ़ा था कि बाय 2040-2045, जैसे मैंने एक और पॉडकास्ट किया था, he also mentioned about how the soil degradation is such a rapid rate that soon all of us will have to, he spoke about grow our own vegetables and for flower side and commercial growing side we will have to adopt soilless technology. What are the varieties जो हम soilless में कर सकते हैं and what are the varieties जो हम soil में कर सकते हैं? मतलब दोनों का difference होता है? No. How does that work? See, soil is a media. We don't have any, see, ऐसा ही जैसे बात कर रहा है, there is a traditional farming, there is an upgradation of technology. वैसा ही सॉइल में जब पहला टेक्नोलॉजी नहीं था, we started with doing this, and सॉइल में सपोर्ट नहीं हो रहा है. प्लांट को क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स द मिनरल्स व्हाट इट रिक्वायर्स, एनपीके न्यूट्रिशंस, उसका एनपीके उसको जो चाहिए. Either you doing it with the hydroponics, you are doing with a cocopeat, any media which is supporting the plants. Plant root can go, what it requires you are giving, the climatic condition you are giving, it can produce. Either it is. But I also feel, I strongly say that the mode of the nation which is happening with the chemical fertilizers, I don't think we are protecting soil for the next generation. But sir, you still need to use some amount of fertilizer, right? Like जो लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, आई हैव कम टू अंडरस्टैंड कि वो ऑर्गेनिक 100% होता नहीं है. यू हैव टू यूज सम फर्टिलाइजर टू गिव द प्लांट द करेक्ट न्यूट्रिशन, राइट? यस, दैट 100% नहीं हो सकता है कमर्शियल प्रोडक्शन में, बट समथिंग यू नीड टू पुट, नो 30-40% आई वाज बीन टॉकिंग. आई एम नॉट सेइंग 100% यू डू. अरे 30-40% मीन्स यू आर स्टिल ड्रैगिंग द थिंग, slowing it down. Slowing it down. But after some time, the future will be, if you wanted to do on the continuous production on the floriculture or the vegetable, it has to be a soilless cultivation. And in the soilless cultivation, when you take the nutrients uptake for the plant is straightly available, easily available, and the productions also will give a bigger 10% than the soil production. So why, can I ask you, are you doing soilless growing? Still, we have not started, but we wanted to start in 1 or 2 years. We are working on it because to upgrade ourselves. See, when you take off gerbras, now today what we are producing. If I can upgrade my system to a soilless thing, I can do a 10% extra production. But there is a cost involved here. The basic one-time cost. If I can do that, again I can take that. That is then upgradation, adoption of the technology. If I don't adopt, I can't get the 10% of What are the extra costs? Can you explain that? See, it requires the holding for that troughs and media and the irrigation system, what it requires for this. Now, soil means you are putting a drip irrigation on the soil. It doesn't require anything. And for this, you require that media. Media is a cost, trough is a cost, and irrigation system is a cost. Irrigation system like? The drip irrigation only. Drip irrigation, but it has with the spikes different on the different crops. It either you want a inline drippers or you want a the spikes things which has a droplets of water. That whatever it requires for that plant, you have to install. That is one time cost. That once you invest on that, again you have to see what happened. जब necessary जब नहीं आता है, nobody thinks. आपको भूख लगे तो ही तब होटल को ढूंढेगा. अभी नाउ थिंग्स आर हैपनिंग विद दिस. घर का खाना मिल रहा है, चला रहा है. जब नहीं हो रहा है, द नेक्स्ट स्टेप एनीबॉडी हैज टू डू. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड. इट्स नॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट.
there are most of the vegetable growers who are doing hydroponics. Vegetables में तो हो रहा है सर बहुत ही स्पीड से. And no, the cut flowers also, we have been there couple of months before to Kolhapur. We have seen a small farmer, Mr. Patil. He's a basic farmer. He doesn't know anything on the technology. He has gone into the soilless cultivation because they were doing sugarcane for years together. His soil was not supporting. He put a greenhouse and he has put in the pot culture with the green gerbera plants. And he was doing excellent. Wow. He has put an automation. He learned how to maintain the TCPH with the technical people. He is doing excellent. He has been very successful doing. In terms of infrastructure, is like, can we do it in a regular polyhouse, soilless? Same polyhouse, only you need to put the troughs and the pots or the media what is required for that plant growing, that is need to be added to that. So, क्या मैं कह सकता हूँ कि moving ahead, जो नए growers आ रहे हैं, they should focus more on soilless growing? Can be. They can start their thing with the soilless. See, soilless or soil, it's a choice of a grower. जैसा हम हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल में एक बफर जोन रहता है, ये नेचुरल एलिमेंट्स रहता है, वो आयरन भी रहने दो, कुछ उधर इधर भी हम फर्टिगेशन जो ड्रिप से दे दिए तो प्लांट कैन हैव दैट बफर जोन. ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी दे दिया, रूम फॉर मिस्टेक रहता है थोड़ा, इन अ वे आई कैन से. यस, वेयर यू कैन. बट anybody who is doing on hydroponics, he need to maintain the scale exact. उसको क्या n चाहिए, क्या p चाहिए, क्या k चाहिए, and what is that micronutrients required. इतना to the requirement देना है. If you are like it's doing like a diet, what your body requires, you can't put like excess. थोड़ा भी ज़्यादा नहीं. If you are putting extra, it shows on the plant. If you are giving less, the plant doesn't perform. You need to be very perfect. Only इससे कोई ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं. Once you understand the system, there are so many automations. हाँ, जैसे technology, automation, all that can help. Everything is been available easily in the market. Once you adopt the thing, and once you understand the thing, and once you implement the thing, then it becomes very easy. Right. So, I mean, एक चीज़ clear है कि hydroponics में room for mistake कम है. Yes. But at the same time, there is the technology, there is a level of automation जिससे लोग उसको automate और एकदम end to end कर सकते हैं. Yes. And only we are talking on the soilless. When you talk about the world, when you talk about the Europe, you talk about Colombia, you talk about Thailand, or you talk about Italy, you talk about Spain, they're all on the soilless. Okay. Now they have been upgraded. They have been able to take whatever they wanted, what quality they wanted, and what is missing. Today, if you are giving any of the element which is missing in the soil, you think, okay, I am not getting a bigger bud size. मेरा flower size कम है. Then you try to put a little bit of potassium. And the volume of soil में कहाँ जाके plant को uptake को वो percentage मिल रहा नहीं मिल रहा, you doesn't know. But in the soilless में, you 100% the volume of water, what is there, soil, and you can command that area. But in the soil, that is little difficult. Understood. Sir, I think moving ahead, agriculture ka future is very bright, right? And floriculture will also play a very important part in that. There are 3 group of people मैं चाहता हूँ उनको मैसेज दें. नंबर 1, द फ्यूचर ग्रोअर्स. अगर मैं एक नया ग्रोअर हूँ, उनको एक मैसेज देना है या पीस ऑफ एडवाइस कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, राइट? एंड नंबर 2, द एग्जिस्टिंग फार्मर्स. कई सारे किसान हैं जो अभी खेती कर रहे हैं बट उनको लगता नहीं है कि खेती में वो स्कोप है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं. एंड नंबर 3, द ऑफिशियल बॉडीज हु कैन सपोर्ट आवर इकोसिस्टम, राइट? सो व्हाट वुड योर मैसेजेस टू ईच वन ऑफ दीज पीपल बी? जो भी नया लोग आना चाहता है, they are welcome, because until unless new people come into this thing, we can't be एक हाथ से वो सपोर्ट नहीं होता है. जो मार्केट का हमारा जितना लोकल डोमेस्टिक यही है, that we require new people coming into, but focus on the, not a focus on one particular crops, focus on different crops. जो ज़रूरी है, there are so many flowers which is getting imported into Indian market. You have a lot of scope of the other varieties. Focus on those varieties.
try to produce the market required varieties. Only for flowers, sir, also vegetables, you're saying? Vegetables are not getting imported, but it has been produced here, and there is a lot of scope for the exports of vegetables. Focus on newer markets also. Newer markets. The people who are getting into this, आप कैप्सिकम ग्रो करके एक गांव में बेच नहीं सकता है ना. If you are producing a capsicum, that market is there to the tier 1 city, tier 2 city. You reach to reach those people. Everybody wants it, but when there is not available, they are putting to the. आज हम पिज्जा बर्गर में भी गया तो when you see a McDonald's, on the ad you see a good leaf. What is that leaf? Lettuce. Lettuce, yeah. Lettuce. But when you go for a real burger, he doesn't put a proper leaf because it's not available. When you talk to those people, they say, sir, India mein kahan milta, usliye the size of volume they show on the picture, the volume what they deliver is very few. Means there is a market requirement and there is an export market. Dubai is a huge market, UAE countries. It can have a lot of scope. Let us produce to that markets and do that. Handling of packing is a major role, the vegetables. If you do it in a right way of packing and packaging system, then it can reach to the customer in a bigger way. Right. And existing growers don't get relaxed. Don't think that I'm to 7 साल का experience है, 10 साल का experience what you have done for that years, that is gone. Using that experience, learn things, get upgraded to yourself. Don't restrict yourself. Focus on your farm. Implement on the technologies. Adopt technologies. Focus on it. Don't get into a negative mode. Be on the positive mode. The industry is only one sector can take you better and better. Learn. Keep learning. Keep learning and implementing. Learn and implement. If you don't implement, then it is gone. And the government officials, this is one sector where our Prime Minister's vision is there to increase the farmers' income. This is one sector can do 10-20 times in their incomes. Get the informations, share the information to the farmers, adopt the technologies from the horticulture departments, share that information to the farmers and make the knowledge sharing, and it can really flourish our farmers, Indian farmers, and we can take it to the next level. So it's fair to say कि agriculture is the future, and अभी आगे बढ़ते हुए India will be positioned to win on the global map. Yes. If I don't say agriculture is not a future, my future would have not been here. From a village where I can't earn thousands of rupees, today I am able to do a turnover of 70 crores. Means it's only because of the agriculture. A 10th class student, do you expect him to do better than so much of business? It is not possible. This is agriculture has a bigger. What I am saying, I might be a small. There are few people who are doing in crores of rupees in this turnover. There are so much of venture. There is a bigger thing. There is a huge scope for the agriculture. You focus on technologies, adopt technologies, and do in a better way. Shrikant sir, thank you so much for your time. इस podcast से I think मैंने बहुत सीखा. I'm sure the people watching उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा. And मैं hope करता हूँ कि listening to this podcast, watching this podcast, all the people are able to carry your message forward. And one very important thing, they need to act, not stay in motion. They need to implement, learn and implement. That's where any of this makes sense. Yes. Otherwise, it's just another YouTube channel, another piece of information. Thank you so much for your time, sir. It was an honor and pleasure talking to you. See you soon. Thank you very much, Abhi, for giving me an opportunity. No, sir, you A deserve. basic person from a village to give some information to the industry. I also feel very proud when people like you or the industry, when they identify and take this information. If this information can be useful for someone, Even for one farmer. I will be very happy. I always invite a lot of farmers to get into my farm, take the knowledge, because that is how I have gained knowledge from the other people, going to the other farms and getting knowledge. If there's any farmer from any part of the India, if they can come and want to learn from my farm, I'm always welcome. Yeah, you can reach out to us. We will definitely share Shrikant sir's farm location also, if that's okay. Yeah. And we can conduct training sessions for free of cost. Yes.
we're open to teach people. Yes, always. Thank you, sir, and you. see you soon. Thank you.